नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह टाक, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको नेटवर्क एनालिसिस पढ़ाऊंगा जो सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइबर ब्रांच में कॉमन है। इस सब्जेक्ट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत हार्ड है, कुछ कहते हैं ये, लेकिन सचमुच में अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये बहुत अच्छी स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। लेट स्टार्ट विद सम डेफिनेशन। What is network analysis? नेटवर्क एनालिसिस वो प्रोसेस है जिससे अपन किसी भी परिपथ में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, करंट ज्ञात करते हैं या पावर कितनी लेता है वो, ये सारे सर्किट एनालिसिस में आते हैं। नेक्स्ट, सर्किट एलिमेंट्स। इट मे बी डिफाइंड एज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू अदर टू टर्मिनल डिवाइस। यानी कि सर्किट एलिमेंट वो एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसका वी आई करैक्टरिस्टिक अगर अपन ड्रॉ करें तो एक लीनियर सीधी लाइन है, वी प्रोपोर्शनल टू आई। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जबकि नॉन लीनियर में वी आई करैक्टरिस्टिक्स है, जो नॉन लीनियर फंक्शन होंगे, वी आई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या कोई और, तो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन लीनियर। लीनियर ग्राफ और नॉन लीनियर ग्राफ दिखाया गया दोनों। पहले सर्किट में लीनियर करैक्टरिस्टिक्स और नॉन लीनियर, ये एग्जांपल है लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर। पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट वो है जो कुछ नहीं करता, केवल एनर्जी के ट्रांसफर कर सकता है। दे कैन नॉट जनरेट एनी एनर्जी बट दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड एनर्जी, बट दे रिक्वायर असिस्टेंट फ्रॉम एक्टिव डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो खुद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं परिपथ में। दे कैन एम्पलीफाई द एनर्जी, कम कर सकते हैं, बूस्ट स्टेप में भी चेंज कर सकते हैं, तो एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। दैट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट और एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल डायोड, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइसेस, वैक्यूम ट्यूब एक्सेट्रा। हमारे तीन मुख्य कंपोनेंट है जो काम आते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। इनका असर अपन डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये इस टेबल में शो किया गया है। एक एलिमेंट रेजिस्टेंस जो है वो अगर अपन डीसी सप्लाई लगा दें, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग एकदम से डीसी सप्लाई तो हाई फ्रिक्वेंसी एक्शन होता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वही होगी जो रेजिस्टेंस इनिशियल थे। इस तरह से अगर लंबे टाइम तक वो डीसी सप्लाई इसके ऊपर रखे तो भी उसके करैक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। कैपेसिटर। कैपेसिटर में अगर अपन इमीडिएटली कोई चेंजेस करें इनपुट में, डीसी सप्लाई थ्रू स्विच देगा तो स्विचिंग के इमीडिएटली आफ्टर, दैट इज टी इक्वल 0+, दैट वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट। वाइल अगर अपन इसको बहुत लंबे टाइम तक रखेंगे तो इट इज वर्क एज ओपन। Similarly, inductance. Inductance initially during the switching time it work as a open circuit, while फिर long time रखेंगे तो it is work as a short circuit. अगर इनके ऊपर कोई एनर्जी इनिशियल चार्ज या करंट है तो वो एज इट इज रहेगी। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट। यूनिलैटरल एलिमेंट वो टू टर्मिनल एलिमेंट हुज वी आई करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट इन बोथ डायरेक्शन, और अगर बोथ डायरेक्शन में सेम है तो दैट इज कॉल्ड बायलैटरल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस इज द बायलैटरल, व्हेयर डायोड इज यूनिलैटरल। डायोड की आपने देखा होगा रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में अलग अलग अभिलक्षण प्राप्त। लूम्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। Loom system or element are those systems in which electrical property like RLCR
assumed to be located on a small space of the circuit, these systems are applicable for low frequency application. On the other hand, distributed system assume that electrical process across the entire circuit, these systems are not applicable for higher frequency application. तो कहने का मतलब है कि लूम पैरामीटर जो है वो फिजिकल अपीयरेंस रखते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट हाई फ्रिक्वेंसी पे शो होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया इंडक्टेंस के आरडी और सीटी डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट एलिमेंट्स हो गए। तो अपन कहते हैं the element is said to be loom if the physical dimensions are negligible compared with the wavelength of the EM signal. Hold the Kirchhoff law, voltage current are function of time only, it is called loomed element. मतलब कि distributed capacitor में no longer valid Kirchhoff's law, current are function of time as well as space. The effect of parameters so are called distributed element. Ideal and practical voltage source. Ideal sources are those imaginary electrical sources which provide constant voltage or current to the circuit regardless of the load current. These ideal source doesn't have any internal resistance where it is impossible to build a source with zero internal resistance, so all the real sources are called practical sources. ideal source की अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये हकीकत में नहीं हो सकते हैं। वायर प्रैक्टिकल सोर्स ही होते हैं। प्रैक्टिकल सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसके सीरीज में, तो अगर अपन लोड ज़्यादा लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो some resistance value in series with the ideal voltage source, and because of these series resistance the voltage drop when current passes through it. So practical voltage source have internal resistance and slightly variable voltage. ये अगर टाइम के अक्रॉस अगर ग्राफ खींचे तो जैसे जैसे टाइम इसके वी या आई चेंज होंगे। नाउ अगर बहुत सारे वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स पैरेलल में जुड़े हो, करंट सोर्स जुड़े हो, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, अगर पैरेलल कनेक्शन में आइडेंटिकल वोल्टेज सोर्स आर इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ ए सिंगल सोर्स, अगर इस तरह से आइडियल वोल्टेज सोर्स पैरेलल में जुड़े हो तो इसका इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उनका सारे वोल्टेज जुड़ जाएंगे और जितने जुड़े हैं उनका सबका योग होगा, सम ऑफ सीरीज कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स। इसी तरीके से पैरेलल कनेक्शन ऑफ द करंट सोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल कनेक्टेड करंट सोर्स, और करंट सोर्स पैरेलल में जुड़े हो तो उनका इक्विवेलेंट होगा, जितने जुड़े उन सबका योग। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स इज इक्वल टू ए सिंपली वोल्टेज सोर्स, यानी कि एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज आइडियल सोर्स पैरेलल में जुड़े हो तो वो कैन बी रिप्लेस बाय ए सिंगल वोल्टेज सोर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स इज इक्वल टू द करंट सोर्स, अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स सीरीज में जुड़े हैं तो उसको सिंपली करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। Ideal and practical current sources. A imaginary current source which provide a constant current to any load ranging from 0 to infinite. Remember that the current provided is independent of the load. This ideal current source is supposed to have an infinite internal resistance RS. Again, it is not practical possible to make one. यानी कि आइडियल प्रैक्टिकल सोर्स नहीं होते हकीकत में जिसका इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस हो, तो पैरेलल में जुड़ा होता है। प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल आइडियल करंट सोर्स एंड सम ऑफ द करंट फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस, सो इट इज ऑलवेज वेरिएबल। वोल्टेज सोर्स और सिंबल होते हैं, जैसे यूनिपोलर सेल है, बैटरी है, पावर सप्लाई है। बाइपोलर में एसी का सिग्नल है, प्रॉपर्टी कांस्टेंट, वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द करंट, यूजली आइडियल। एग्जांपल बैटरीज, पावर सप्लाई, सिग्नल जनरेटर, these are some voltage sources.
dependent and independent source. A voltage source not depend upon the other circuit parameters are the independent source. Independent sources provide the almost constant voltage and current irrespective of different circuit elements. Circuit change causes internal resistance. While dependent source output source depend upon the some circuit parameter, यानी कि सर्किट के किसी भी दूसरे पैरामीटर से अगर आउटपुट चेंज होता है तो अगर सोर्स में चेंजेस होता है तो दैट इज डिपेंडेंट, और अगर कोई भी चेंजेस नहीं होता है दैट इज इंडिपेंडेंट. These are four types: voltage controlled current source, where the current source is depend upon the voltage; current controlled current source, where the current source is depend on the current; voltage controlled voltage source, that is where voltage source is depend upon the. So dependent and independent sources. Independent source there is no change from any part of the circuit, while dependent में जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको कहीं न कहीं से वेरी करता है, या तो वोल्टेज से या करंट से कंट्रोल होता है. रेजिस्टेंस तो ये सिंपल है. इट इज ए पैसिव कंपोनेंट दैट लिमिट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. इट इज बाइडायरेक्शनल एंड लीनियर कंपोनेंट. Resistance is two terminal element which have same value at t equal to 0 at t. It is linear long passive element where they are connected in series or parallel. अगर सीरीज में जुड़े होंगे तो R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर पैरेलल में जुड़ा है तो 1 by RD इक्वल टू 1 upon R1, 1 by R1, 1 by R2 plus so on. Capacitor. Capacitor is a passive electrical component, electronics component that store the energy in form of electrostatic field. These capacitors are directly proportional to the surface area of the plate. It is inversely proportional to the separation between the plates. Capacitance also depend upon the radiality constant of the substance separating these plates. कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाए तो 1 by CT equal to 1 upon C1 plus C2 and so on, और अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो CP equal to 1 C1 plus C2 plus C3. Inductance. Inductance is two terminal element, is a linear bilateral passive component. It stores the energy, and अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो L1 L2 L3 LS equal to and LP 1 upon LP is 1 upon L1 and so on. So this is all about some definition of the network analysis which is required to know before we go into exact analysis. Thank you very much for cooperation.